Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. I hope all of you have been doing all right. We will be discussing first US Constitution was passed in 1787. It was ratified in 1788 and it was implemented in 1789. Okay. So we will be discussing industrialization. Today we will also be discussing the role of USA in First World War. We will be talking about progressivism as well. Industrialization means primarily mechanization of labor, mass production of goods, and shifting of production from manual labor to mechanized labor को हम primarily इंडस्ट्रियलाइजेशन से ताबीर करते हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक फिनोमेना है. The home to industrial revolution was England. The home to industrial revolution was England. The reason for that was that England had comparative political stability in the country, unlike most other countries of Europe. They had a stable monarchy and a stable democracy as well that provided them time and cushion to pursue scientific pursuits and industrialize. England, at the same time, they happened to be the largest colonial power that there was. So they did not have any dearth of raw material. दुनिया की सारी मेजर कंट्रीज उनकी कॉलोनीज में थी, तो उनके पास कोई रॉ मटेरियल की कमी भी नहीं थी. Another reason is जब आपके पास रॉ मटेरियल की कमी ना हो और जब आपके पास इंडस्ट्री हो, तो फिर अगली चीज जो आपने देखनी होती है वो होती है मार्केट. चीजें जो बन रही हैं वो बेचने के लिए मार्केट भी अवेलेबल. इंग्लैंड को वो मसला भी नहीं था. वही कॉलोनीज ही उन्हीं का रॉ मटेरियल अपने यहाँ फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके उन्हीं को बेच दिया जाता था, इसलिए वो मसला भी नहीं था. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड के साथ ही अमेरिका में भी आया. Britishers ही लेकर, one of the things, one of the impacts of British advent in America. So America also had similar circumstances. Industrialization का अगर अमेरिका में हम background या causes देखें तो वो भी यही है. America had a lot of availability of raw material. Raw material इनके पास available था. I mean, it was an untapped island जहां से आप उस जमाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो अशिया चाहिए थी, आयरन चाहिए था, कोल चाहिए था, बाकी चीजें चाहिए थी, वो अमेरिका में अवेलेबल थी. अमेरिका में मैन पावर का भी मसला नहीं था. आपके पास एग्रीकल्चर पूरे का पूरा स्लेव्स ने संभाला हुआ था. उसके बाद स्लेवरी खत्म होती है जाकर 1865 में जाकर. फर्स्ट फेज इंडस्ट्रियलाइजेशन का तब तक पूरे अमेरिका में फैल चुका था. इन मेजर इंडस्ट्री अमेरिका की लग चुकी थी ऑलरेडी. सो एग्रीकल्चर उधर चला गया, तो बाकी जो लेबर अवेलेबल थी सारी की सारी वो इंडस्ट्री में कंज्यूम हुई. तो मैन पावर का भी इनको इशू नहीं था. कैपिटल वाज आल्सो अवेलेबल. अमेरिकन्स वर brave investors.
उन्होंने रिस्क भी लिए, इन्वेस्ट भी किया चीजों के अंदर। अमेरिका का जो गवर्नेंस, जो इकोनॉमिक मॉडल है, जिसे हम लेसे फेयर इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं, ये भी मुआविन साबित हुआ, हेल्पफुल साबित हुआ अमेरिका को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई बहुत रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कोई लाइसेंसिंग रिजीम या रेड टेपिज्म को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से चीजें जो हैं वो इजी थी बिजनेसमैन के लिए इंडस्ट्रियलाइज करना और परस्यू करना। ठीक है, तो बाय दी ओवरऑल भी अमेरिका में एक जब इंडस्ट्री डेवलप हुई तो एक स्लोगन था, कीप मूविंग का स्लोगन। जैसे हमने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमने मैनिफेस्ट डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट दिया, हमने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक स्लोगन इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हमने कहा कीप मूविंग, काम करते हुए नजर आए सबके सब। ठीक है, सो इंडस्ट्री का आगाज अमेरिका में 19th सेंचुरी की फर्स्ट 2 डेकेड्स में हो गया। 1812 की वॉर के बाद अमेरिका में इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये इनिशियल इंडस्ट्री थी जो पानी पे चलती थी, मिलें पानी पे चलने वाली मशीनें थी। तो मिल के लिए या जो इनिशियल इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे वो पानी की तवानाई पर चलते थे। छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट थे, 60-70 लोग इनमें काम करते थे। ज्यादातर बिजनेस मॉडल ये था कि फैमिलीज हायर की जाती थी और जो हेड ऑफ द फैमिली मेल होता था उसको ही बाकी फैमिली से काम करवाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। मजदूरी कैश के बजाय काइंड में मिलती थी, जो चीज प्रोड्यूस करती थी फैक्ट्री वो इन लोगों को मिल जाती थी, इनके मकान का किराया फैक्ट्री अदा कर देती थी या बाकी चीजें जो है वो फैक्ट्री अदा करती थी। देन ये स्टीम इंजन, यूज ऑफ कोल, अहमद, ये बाद में इंडस्ट्री मैसिव लेवल पे बाद में इस्तेमाल होना शुरू की जो अमेरिकन इंडस्ट्री है, आप थोड़ा सा जब पढ़ेंगे जाके यू विल अंडरस्टैंड कि शुरू की जो अमेरिकन इंडस्ट्री है वो पानी पे लगी, पानी की तवानाई पर लगी है। पहली जो मेन कंपनी भी थी जो कपड़े बनाने की कंपनी थी या जो पहली जूते बनाने की कंपनी थी, दोनों यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया था। एनीहाउ, सो ग्रेजुअली जो है roaring 20s is not it is not 1820s, roaring 20s is 1920s. Anyhow, तो वहां से इन्होंने आगाज लिया, ग्रेजुअली इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई। इंडस्ट्री के साथ साथ अमेरिका में जो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है वो भी डेवलप हुई और उस प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ ने फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन को इनकरेज किया along with the government policies. However, जो सिविल वॉर है उसने इस प्रोसेस को रोका। सिविल वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन का जो फेज है उसमें ये प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ तेजी से, दूसरा फेज इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और उस फेज के अंदर तकरीबन जो है 1 करोड़ के करीब मजदूर, लेबरर्स दूसरे मुल्कों से आए हैं। फ्रॉम 1830 टू 1910, 40 साल के अरसे में 12 मिलियन लोग दूसरे मुल्कों से अमेरिका गए हैं मजदूरी की तलाश में। तो ये भी एक रीजन थी कि लेबर अवेलेबल थी। फिर रेल रोड का आ जाना, कनेक्ट होना अमेरिका का, टेरिटोरियली इट्स ह्यूज, तो अमेरिका की का कनेक्ट होना, रेल रोड एंड वाटरवेज का बनना was also a reason. Railroads and waterways, क्योंकि उस जमाने में बिगर चैलेंज यही था कि किस तरह से मजदूरों को फैक्ट्री तक और फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट तक सेफली एंड स्विफ्टली पहुंचाया जा सके। तो उस पर्पस के लिए रेल रोड के जरिए अमेरिका को कनेक्ट किया गया। 1870 में अमेरिका हैड मोर रेल रोड नेटवर्क देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड टुगेदर। 1870 तक अमेरिका के पास इतना रेल रोड नेटवर्क था
ट्रांसकॉन्टिनेंटल, बाकी पूरी दुनिया के पास माइलेज के हिसाब से उतना रेल रोड नेटवर्क नहीं था। अमेरिका में रेल की तरक्की का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि 1820 में ही अमेरिका में अंडरग्राउंड रेलवे एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई थी। तो रेल रोड का और वाटरवेज का बनना जो है वो भी एक रीजन है अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन की। Another reason is scientific inventions. उन scientific inventions में steam engine का आ जाना, उन scientific invention में eventually जो आपके fossil fuels हैं, जो आपका पेट्रोल वगैरह है उसका आ जाना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आ जाना, टेलीग्राम का इजाद हो जाना। 1844 में पहला सक्सेसफुल टेलीग्राम भेजा गया था, 1830 में उस पर काम शुरू कर दिया गया था। $30,000 कांग्रेस ने पैसे सैंक्शन किए थे टेलीग्राम के प्रोजेक्ट के लिए, और फाइनली ये टेलीग्राम मुमकिन हो सका था 1844 में, जिसने जो है कम्युनिकेशन इजी कर दी और बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेशली और इजी कर दी। टाइपराइटर इजाद हुआ, लिखने लिखाने से जान छूट गई इंसानों की, फिजिकल जो पैसों को उठाकर लेकर जाने से जान छूटी, जब इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट्स और इस तरह की चीजें बैंक्स ने इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, साइंटिफिक इन्वेंशंस ने भी जिंदगी आसान कर दी। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हुई। बाय द टर्न ऑफ सेंचुरी अमेरिका वाज अ बिगर प्रोड्यूसिंग पावर। बाय द टर्न ऑफ सेंचुरी America was a bigger producing power than England, Japan, Italy, and France combined together. England, Japan, Italy, and France combined together. उनसे ज्यादा अमेरिका प्रोडक्शन हाउस था। सिर्फ अगर आप उसमें ऐड कर देते जर्मनी को तो प्रोडक्शन अमेरिका से बढ़ जाती, अदरवाइज प्रोडक्शन हाउस अमेरिका ज्यादा बड़ा था बाकी लोगों से। तो ऑब्वियसली जब इस लेवल की एक्टिविटी कहीं आप करेंगे तो उसके इंपैक्ट्स भी आएंगे। Impacts of industrialization. उन impacts में obviously कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, everything is there. एक तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जिल्डेड एज का आगाज किया अमेरिका के अंदर। जिल्डेड एज ऑलरेडी आपको पता होगा, जिल्डेड एज मीन्स मसनूई जमाना, ऐसा दौर, ऐसा जमाना जो दिखावे का, प्रिटेंस का, नौ दौलतियों का दौर। अगर हम आसान तर्जुमा करें तो ये नौ दौलतियों का दौर था, when people had more money and they competed each other for bigger mansions and more vehicles and collection of antiques and paintings, despite of the fact that they knew nothing about their importance, or they knew nothing about what they meant otherwise. तो Gilded Age का आगाज हुआ। Rural to urban migration start हुई, क्योंकि इंडस्ट्री लग रही थी और इंडस्ट्री को चाहिए थी लेबर, इसलिए रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुई। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का दूसरा इंपैक्ट ये आया, इमर्जेंस ऑफ शैंटी टाउन्स, इमर्जेंस ऑफ शैंटी टाउन्स। फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द अनप्लैन्ड शैंटी टाउन्स बनना शुरू हुए। फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द अनप्लैन्ड
शैंटी टाउन्स बनना शुरू हुए, जहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर और उनकी फैमिलीज आकर रहती थी, उनकी फैमिलीज आकर रहती थी। और वो चूंकि अनप्लैन्ड शहर थे, अनप्लैन्ड आबादी थी, नो सिटी वाज रेडी to plan for thousands of new inhabitants in a short span of time. So it created problems of sanitation, it created problems of law and order as well. It created problems for city district governments for managing these places. तो ये भी एक प्रॉब्लम रहा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रॉबर बैरन्स का एक कॉन्सेप्ट भी दिया। हीरोज ऑफ इंडस्ट्रीज, हीरोज ऑफ इंडस्ट्री एंड रॉबर बैरन्स, हीरोज ऑफ इंडस्ट्री एंड रॉबर बैरन्स, ये दो कॉन्सेप्ट्स आए। हीरोज ऑफ इंडस्ट्री उन लोगों को कहा गया जो लोग अपने मजदूरों का ख्याल रखते थे और उनके साथ अपने नफे नुकसान को शेयर करते थे। रॉबर बैरन्स उन सेठ लोगों को कहा गया जो लेबर से फायदा तो उठाते थे, उनकी मजदूरी से अपनी जेब तो भरते थे, लेकिन मुनाफे में इन लोगों को कोई हिस्सा नहीं देते थे। रॉबर बैरन्स उन्हें कहा गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन also created impersonalization of labor. वो जो एक कनेक्शन था मालिक और काम करने वाले के बीच में, वो कनेक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने खत्म किया। मैनुअल लेबर के जमाने में चूंकि 10, 12, 20 काम करने वाले होते थे, तो ओनर उनके बारे में जाती तौर पर जानता था, उनको, उनके मसाइल को समझता था, उनकी फैमिलीज को जानता था, तो एक कनेक्शन था। The owner felt obliged to resolve problems of his servants and servants felt obliged to be loyal to their owner or master. But when industrialization happened, 5,000 लोग एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी एम्प्लॉय कर रही है 50,000 लोगों को, so it is not possible for the owner to know everyone in person. So in came the foremen, and then in came the managers, and then in came the HR, and then there was owner. बहुत सारे tiers बीच में आ गए। The owner did not feel himself obliged for the problems of his laborers. He thought कि ये जरूरतमंद थे, मैंने इन्हें काम दिया, एहसान किया। And similarly, laborers did not feel obliged to be loyal and honest with him. They thought कि ये भी हमारे पैसों से अमीर हुआ है, तो why not we do something जिससे हम भी हो जाएं। तो ये दोनों तरफ एक impersonalization of labor का impact आया है। उसके बाद industrialization also introduced child labor. असद हमने दो लोगों का जिक्र किया, हमने हीरोज ऑफ इंडस्ट्री और रॉबर्ट बैरन्स दोनों का जिक्र किया। There were good people, but there were more bad people than good people. That is the reason why the history of Standard Oil Company, Ida Tubman को लिखनी पड़ी 1904 में to explain the unfair labor practices and bad working conditions in the major industries of America. Anyhow, तो चाइल्ड लेबर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक इम्पैक्ट था, जिसके बाद में इसको खत्म किया गया 1920s में, ठीक है। और दूसरा, आई वंडर कि हेनरी फोर्ड की जो इंडस्ट्री थी वो यहाँ थी भी कि नहीं। एनीहाउ, तो उसके बाद जो
एक और इम्पैक्ट चाइल्ड लेबर का, इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर हुआ है, वो है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, सियासी शऊर लोगों में आया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, बिकॉज पीपल हैड मोर चांसेस टू इंटरेक्ट टुगेदर, had more chances to feel exploitation and then organize labor unions, then trade unions, और फिर concept of strikes, great railway strike आपको याद होगी, उन reasons की वजह से एक सियासी शऊर लोगों में industrialization लेकर आई है। That was a good thing that happened because of industrialization, और एक class, एक strong middle class industrialization ने Americans को दी है। Emergence of middle class industrialization की वजह से मुमकिन हो सकी, जो बाद में politically relevant होती है, आगे progressivism में हम पढ़ेंगे। तो ये भी industrialization के impacts में से था। Industrialization में consumerism को भी बढ़ावा दिया, लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदना, बाइक्स लेना, मोटरसाइकिल्स लेना, नई नई होम कन्वीनियंसेस को खरीदना फैशन स्टेटमेंट बन गया रादर देन अ नेसेसिटी, जिसकी वजह से वो जो कंज्यूमरिज्म का कल्चर है वो डेवलप हुआ। एक्सपोर्ट जाइंट भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अमेरिका बना, एक्सपोर्ट्स भी इसकी बढ़ी, इकोनॉमी इसकी स्ट्रांग हुई। सो देयर आर plenty of impacts that industrialization had. Women का role industry में बहुत ज्यादा है। For the first time, women came and worked in these small industrial units and got paid for what they did. So at one side where it was a liberating experience, though they were away from their homes and they had to send money back home or to have them for themselves, where at one side it was a liberating experience because they were using their own money and having their own money, but at the same time it also exposed them to the discrimination at workplace, where a lady was paid $87 for the same work where man was paid $100 for the same work. तो ये जो discrimination in pay है, that later on led a women labor movement, और इसके बाद equality in jobs and equality in pay का मुतालबा आता है। So industrialization does have a role for improvement of women's status in America as well. Industrialization does have a role for improvement of women's status in America as well. तो ये कुछ impacts हैं। ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर इम्पैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। अली, आप किस चीज का ये पूछ रहे हैं? लेबर मूवमेंट इज एन ऑनगोइंग फिनोमेना। ये 1920s से ऑनवर्ड्स चलती रही है, और उसके बाद 1946 में खवातीन के एक मुजाहरे पर गोलियां चलाई गई थी, जिसके बाद ज्यादा ये जोर पकड़ा इसने, ऑनवर्ड्स न्यूयॉर्क में ही हुआ था, जिसके बाद इस मूवमेंट में ज्यादा जाना है। फर्स्ट इम्पैक्ट मैंने बताया था जी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट्स में से एक इम्पैक्ट जिल्डेड एज का कॉन्सेप्ट है। जिल्डेड एज का मतलब होता है मुलम्मा किया हुआ दौर या मसनूई दौर या नौ दौलतियों का जमाना, जिसमें आप पैसे के बलबूते पर चीजें खरीदें, आप बड़े घरों का कंपटीशन करें, आप स्टेटस दिखाने के लिए गाड़ियां और बाइक्स खड़ी करें, इंस्टेड के आप फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कराएं, और इंस्टेड के आप जो है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए करें। आपको पता कुछ नहीं होगा आर्ट का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, लेकिन आप जो है वो ये चीजें पैसे के बलबूते पर खरीदते चले जाएं। जी, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स है
जो अमेरिकन के यहाँ तब आया था 1870s में, और हम इटर्नली डूम्ड है इस कॉम्प्लेक्स में, पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन जनरल एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान इन पर्टिकुलर। अगली चीज है कि प्रोग्रेसिविज्म। Progressivism 1901 to 1920 प्रोग्रेसिविज्म। लेबर स्ट्राइक रेलवे वालों ने की थी जी, रेलवे के मजदूर पूरे अमेरिका में एक ही दिन स्ट्राइक पर चले गए थे, कई दिन तक स्ट्राइक जारी रही थी। उसके बाद नेगोशिएशंस की थी गवर्नमेंट ने, और कुछ जो उनके मुतालबात हैं वो मंजूर करके तो उस स्ट्राइक को खत्म करवाया गया था। एक वायलेंट स्ट्राइक थी, इसमें कुछ लोग भी मारे गए थे। ये कोई अलग से इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट मेंशन्ड इट एज ए पासिंग रिमार्क। प्रोग्रेसिविज्म, प्रोग्रेसिविज्म एक मिडिल क्लास मूवमेंट है। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आई थी, वो आगे आएंगे, हम उस टाइम तक पहुंच जाए तो वो भी करेंगे। अभी हम 1901 तक पहुंचे हैं। 1901 से 1920 प्रोग्रेसिविज्म का एरा है। ये करके फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करवा के देन हम ग्रेट डिप्रेशन पे पहुंचेंगे 1929 में। ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग कि प्रोग्रेसिविज्म क्या है। प्रोग्रेसिविज्म इज अ मिडिल क्लास मूवमेंट started for the rights of the poor of America। एक ऐसी मिडिल क्लास मूवमेंट थी जो अमेरिकन गरीब लोगों के लिए स्टार्ट की गई थी। इसको स्टार्ट करने वाले आम 9 to 5 नौकरी करने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबरर्स, इवन लॉयर्स थे, लेकिन ये हकूक की बात करती थी आम आदमी की। Some of the rich people also joined this movement। उनमें ज्यादा बड़ा नाम एंड्रयू कार्नेगी का है। एंड्रयू कार्नेगी स्टील के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, गॉस्पेल ऑफ वेल्थ के नाम से। गॉस्पेल ऑफ वेल्थ के नाम से, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ वेल्थ का मतलब ये था कि जो दौलत अल्लाह ताला ने अमीर लोगों को दी है, the wealth that is given to people by God Almighty, it is not theirs to keep। ये पैसे उनके नहीं हैं कि वो अपने पास रख लें। It is their duty to further distribute that wealth। उनकी जिम्मेदारी खुदा ने लगाई है कि वो उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करें, वो आगे लोगों को दें। दौलत को चंद हाथों में इकट्ठा ना होने में, इर्तकाज ना हो दौलत का। However, एंड्रयू कार्नेगी, मैंने लिख दिया है एंड्रयू कार्नेगी, however, he was against providing cash grants to people। He believed that giving cash grants to people would further enhance the poverty net। अगर हम कैश ग्रांट्स देंगे लोगों को तो उससे मजीद जो है वो गुर्बत में इजाफा हो, मजीद गुर्बत में इजाफा हो। ठीक है। सो इसलिए इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश ग्रांट्स टू पीपल, instead of giving cash grants to people, we must give them skills। We must make them learn how to catch fish। We must build libraries, we must build skill development centers, we must build
बिल्ड वॉलंटियर सेंटर्स जहां पे लोग आए और मुफ्त लोगों को स्किल सिखा कर, तो ये भी एक एलिमेंट है। बैटल क्राई क्या थी, मुतालबात क्या थे, किन मकासद के लिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे नो ट्रस्ट सिस्टम, मोर डेमोक्रेसी, लेबर रिफॉर्म्स, women rights, equitable distribution of wealth वगैरह वगैरह। ये बैटल क्राई थे। ये बैटल क्राइज थी इस मूवमेंट की। ट्रस्ट सिस्टम को खत्म किया जाए, ज्यादा डेमोक्रेसी लाई जाए इंस्टीट्यूशंस में, लेबर रिफॉर्म्स की जाए, वुमेन राइट्स लाई जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जाए एंड करप्शन कंट्रोल की जाए। स्पेशली जो शहरी हुकूमतें हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनमें करप्शन कंट्रोल की जाए। करप्शन जो है, नहीं एंड्रयू के पॉइंट्स नहीं है, ये उसके पॉइंट्स हैं, प्रोग्रेसिविज्म के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये प्रोग्रेसिविज्म के ऑब्जेक्टिव्स थे या बैटल क्राई थी या डिमांड्स थी, जो भी आप इसे कहना चाहें आप इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। ये अब ये शऊर, ये चीजें या इसके लिए जद्दोजहद ट्रस्ट सिस्टम बताते हैं। थोड़ा सा हौसला करें, मैं बताता हूं। इसके लिए जो कुछ एफर्ट्स हैं वो उस जमाने के जर्नलिस्टों ने भी की, उनको हम कहते हैं दी मकरेकर्स। आज की जबान में मकरेकर्स को आप समझिए द विसल ब्लोअर्स, या ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने ऐसी चीजों के ऊपर लिखा जिन चीजों के ऊपर उससे पहले नहीं लिखा गया। उनमें 1904 लिंकन स्टेफन्स की बुक थी द शेम ऑफ द सिटीज। ये किताब बेसिकली was about the corruption in city district governments। शहरी हुकूमतों में जो करप्शन होती है, ये किताब उसके इंस्टांसेस, उसका डेटा और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है। 1904 में ही आइडा टर्बमन ने लिखी द हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जिसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर्स एंड पॉलिसीज ऑफ कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बारे में बताया गया। 1906 में अपटन सिंक्लेयर wrote a book called The Jungle was about Chicago's meat market. He collected data and he visited the place and he explained to the rest of the Americans how badly Chicago meat producer है अमेरिका का, आज भी मेजर मीट प्रोड्यूसर है अमेरिका का। He told the world how badly managed these meat markets are.
He explained the health hazards related to it, how unhealthy the animals are, how unhealthy the staff is, how unhygienic the conditions are, and that meat is consumed by kids of the public schools, that meat is consumed by everyone in America, which is sheer danger to the health directly. So इन हवालों से भी अवेयरनेस लोगों में डेवलप हुई. So different presidents started taking actions against it. Trust system पे बात करते हैं. सबसे पहले ट्रस्ट बस्टिंग स्टार्ट हुई. ठीक है. तीसरी बुक का नाम है दी जंगल. JUNGLE. जॉन टबमन नहीं, आइडा टबमन का मैंने नाम लिखा है. आइडा टबमन की किताब है द हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जिसमें उन्होंने अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयटेटिव टैक्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट्स और हालत-ए-जार जो है आम मजदूर की, उसके बारे में बात की. ट्रस्ट सिस्टम क्या है? ट्रस्ट सिस्टम सादा सी जबान में समझिए मोनोपोली दो तरह से, कार्टलाइजेशन है और मोनोपोली है. कार्टलाइजेशन है और मोनोपोली है. कार्टलाइजेशन है इस तरह से क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट लेसे फेयर बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रही थी, इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रही थी, तो वो इन सेठ लोगों से कोई खास पूछती नहीं. ठीक है. इन सेठ लोगों से कोई खास बात पूछती नहीं थी. और अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट था कि इट्स ऑल राइट टू मेक मनी. जिस तरह से भी कोई पैसे बनाना चाहता है उसे पैसे बनाने दें, क्योंकि वो पैसे बनाएगा तो वो खर्च करेगा और यूं सारे मुआशरे का भला होगा. तो कार्टलाइजेशन ये थी कि सीमेंट इंडस्ट्री वालों ने, फर्ज करें अगर 4 कंपनीज हैं सीमेंट की, कोई $2 पर बैग सीमेंट बेचता है, कोई $3 पर बैग सीमेंट बेचता है, कोई $4 पर बैग सीमेंट बेचता है, कोई $5 पर बैग सीमेंट बेचता है. तो वो चारों ये डिसाइड करें कि हम आइंदा से $6 पर बैग सीमेंट बेचेंगे सब के सब, और उससे नीचे कोई नहीं बेचेगा ताकि मार्केट में उससे नीचे सीमेंट अवेलेबल ही ना हो. दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट सिस्टम. दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट सिस्टम. आज हम इसे कार्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट सिस्टम. एक तो ये तरीका है कि एक बिजनेस से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है वो आपस में एका कर ले और वो अपने खरीदार को एक्सप्लॉइट करे. दूसरा एंगल जो ट्रस्ट का है वो ये है कि कोई एक बिजनेसमैन, कोई एक सेठ एक मखसूस बिजनेस के तमाम हवालों पर, एक मखसूस बिजनेस के तमाम एंगल्स के ऊपर कब्जा कर. एक मखसूस बिजनेस के तमाम एंगल्स के ऊपर कब्जा कर. मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने मोनोपोलाइज कर लिया था ऑयल बिजनेस को. एक्सट्रैक्ट भी वही करते थे, क्लीन भी वही करते थे, डिस्ट्रीब्यूट भी वही करते थे, बेचते भी वही थे. सो इफ यू आर अ गवर्नमेंट यू वुड नेवर वांट कि आपकी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी से बिगड़ जाए. अगर बिगड़ गई तो पूरा अमेरिका स्टैंड स्टिल करने की सलाहियत वो लोग रखते थे, और इस सलाहियत और इस कैपेसिटी को फिर वो इस्तेमाल भी करते थे. ठीक है. So this is one thing जो जिसे हम ट्रस्ट सिस्टम कहते हैं. तो डिफरेंट प्रेसिडेंट्स ने इस ट्रस्ट सिस्टम को खत्म करने की ग्रेजुअली कोशिश की. प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट्स कौन है? प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट्स में यंगेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट है, 1901 to 1909. William Howard Taft है,
1909 to 1913 और उसके बाद वुड्रो विल्सन है 1913 to 1921। ठीक, किस रंग का मार्कर लिया जाए? I was writing with the black, you said कि नहीं जी ये चेंज कर दें। Now I'm writing with the blue, now you are saying अब ये चेंज कर दें। Theodore Roosevelt served from 1901 to 1909, 2 terms. William Howard Taft was a judge before becoming president. Then he became president, and after losing the election next time, he was also made Chief Justice of America, and he served there as well. So he is the only president who served both positions, as President of America and Chief Justice of America as well. तो ये एक यूनिकनेस उनके साथ अटैच रही। तो इन सारे प्रेसिडेंट्स को प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट्स कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले ट्रस्ट बस्टिंग स्टार्ट की। ट्रस्ट बस्टिंग, ऑल्दो पहला जो एंटी ट्रस्ट लॉ है वो 1890 में आया, उसको कहते हैं शर्मन एंटी ट्रस्ट लॉ। लेकिन ये लॉ भी उतना सख्त नहीं था, ये लॉ भी उतना सख्त नहीं था। लिहाजा टेडी रूजवेल्ट के दौर में फिर ज्यादा सख्त लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिन्हें हम कहते हैं क्लेटन एंटी ट्रस्ट लॉज। क्लेटन एंटी ट्रस्ट लॉज, जिनके तहत ट्रस्ट बस्ट किए गए। मोर देन 90 ट्रस्ट वर बस्टेड। 90 से ज्यादा ऐसी मोनोपोलीज और कार्टेल्स जो हैं वो तोड़े गए अमेरिका में क्लेटन एंटी ट्रस्ट लॉज के तहत और प्रोग्रेसिविज्म के नीचे। टेडी रूजवेल्ट जी के दौर में 1909 में प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। 1906 में प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट, which meant that it was a criminal offense in America back in 1906 to make adulterated food. खुराक में मिलावट करना क्रिमिनल ऑफेंस था, और स्पूरियस ड्रग्स बनाना, जाली अद्वियात बनाना भी क्रिमिनल ऑफेंस था। इसलिए 1906 में ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया, और शिकागो मीट मार्केट की किताब के ज़ेरे असर। ठीक है जी। देन डिफरेंट प्रेसिडेंट्स ने लेबर रिफॉर्म्स भी की। लेबर रिफॉर्म्स में अगर हम देखें child labor was banned. No child below the age of 14 was allowed to be employed by anyone. किसी को ये इजाजत नहीं थी कि वो 14 साल या उससे छोटी उम्र के बच्चे को नौकरी पर रखे। ये जुर्म करार दे दिया गया। वर्किंग डे 10 घंटे का कर दिया गया 12 घंटों की निस्बत। Working day reduced to 10 hours, and working in mines in shifts was banned as well. एक एंटीक्विटीज एक्ट लाया गया था जिसके तहत माइंस में सेम सेट ऑफ लेबरर्स के साथ आप डबल शिफ्ट में काम नहीं करवा सकते। एक तो इसका मकसद ये था कि मोर लेबरर्स शुड गेट वर्क, और इसका एक इम्पैक्ट ये भी था कि ज्यादा देर तक माइंस में
जब लेबरर्स रहते हैं तो उनके लिए हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट होते हैं। तो ये भी इंट्रोड्यूस हमने किया। लेबर रिफॉर्म्स में हमने लेबर सेफ्टी का भी ख्याल किया। हैपबर्न एक्ट या रेल रोड एक्ट, ये डिफरेंट लॉज इंट्रोड्यूस करवाए जिसमें हमने कहा दैट कंपनीज आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड सेफ्टी गियर to their workers. If they fail to provide safety gears to their workers, the workers are free to refrain from working. वो साफ इनकार कर सकते हैं, रिफ्यूट कर सकते हैं कि वो काम करेंगे। और अगर उनके खिलाफ कोई लेकर आता है इस तरह की चीज, तो हुकूमत उस कंपनी के खिलाफ काम करेगी। मिसाल के तौर पर रेल रोड वालों के लिए जरूरी करार दिया गया कि वो जो स्पेशल बूट्स है लोगों के लिए या जो रोड सेफ्टी इक्विपमेंट है वो उन्हें दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी वालों के लिए कैप्स और दूसरा गियर्स जो है वो इंश्योर कराए जाए। और नई कंपनियों के लिए भी ये पॉलिसी बनाई गई कि वो अपने सेफ्टी इक्विपमेंट की इन्वेंट्री पहले अथॉरिटीज को दिखाएंगे। अपने सेफ्टी इक्विपमेंट की इन्वेंट्री पहले दिखाएंगी कंपनी को रजिस्टर करने से पहले। तो चाइल्ड लेबर बैन की गई, वर्किंग डे रिड्यूस किया गया, वर्किंग इन माइंस को बंद किया गया डबल शिफ्ट में काम करने से, और सेफ्टी इक्विपमेंट और सेफ्टी गियर को इंश्योर कराया गया। ठीक है। इसी तरह 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी इस इरा का जो प्रोग्रेसिविज्म का इरा है उसका इम्पैक्ट। प्रोग्रेसिविज्म के इरा में ही 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी किए। 16th Amendment 1913, central government to impose and collect income tax। इनकम टैक्स को आज के बाद, ये पहले सूबाई सब्जेक्ट होता था, इनकम टैक्स को फेडरल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, फेडरल गवर्नमेंट ही इंपोज करेगी, ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज वाले सूबाई हुकूमतों को टैक्स नहीं देते थे, ब्लैकमेल करते थे या खरीद लेते थे। तो ये अमेंडमेंट लाई गई ताकि फेडरल गवर्नमेंट ही इंपोज करे, वही टैक्स कलेक्ट करे और वो लोगों पर फिर लगा सके। फेयर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कल्चर इंट्रोड्यूस किया जा सके। 17th अमेंडमेंट भी 1913 में ही आई, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द सेनेटर्स। 1913 से पहले अमेरिका में सेनेट के इलेक्शंस भी हमारे इलेक्शंस की तरह ही होते थे। सूबाई असेंबलियां वोट डालती थी 2-2 सेनेटर्स के लिए, तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन था, which was not a very democratic way of doing things। तो 1913 में फिर अमेंडमेंट की गई। 1913 के बाद से आज तक सेनेट के इलेक्शंस भी अमेरिका में डायरेक्ट होते हैं। 1913 से लेकर आज तक सेनेट के इलेक्शंस भी अमेरिका में डायरेक्ट होते हैं। ठीक है जी। Then came the 18th Amendment 19 ये थी बैन ऑन अल्कोहल। So this
movement went on for a bit of moral policing as well. इन्होंने right kind of behavior establish करने के लिए liquor ban करवाया अमेरिका में, शरीयत नाफिज की, शराब खरीदना, बेचना, पीना, बनाना, ट्रांसपोर्ट करना, सब कुछ बैन कर दिया गया। लेकिन इसका फायदा कोई नहीं हुआ, फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ। The government lost all the revenues. The police was busy finding who is drinking liquor and who is not drinking liquor and who is transporting it and who is not transporting it. पुलिस क्राइम फाइट करने के बजाय इस काम पे लग गए। फाइनली ये अमेंडमेंट खत्म कर दी गई थी 21st अमेंडमेंट के जरिए, ठीक है। 21st अमेंडमेंट में 1933 में 21st अमेंडमेंट आई और उसमें फिर लिकर को बैन को खोल दिया गया, लेकिन एज लिमिट 21 साल लगा दी गई। टू कंज्यूम एनी काइंड ऑफ लिकर यू हैव टू बी 21 years of age. 1933 ban was lifted in 1933 through 21st amendment. So good 14 years liquor ban रहा अमेरिका में, but it didn't work out for the Americans. उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। Like in पाकिस्तान में लिकर बैन ज़िया साहब ने नहीं किया था, पाकिस्तान में लिकर बैन भुट्टो साहब ने किया 1977। उससे पहले आपको शॉप्स पे मिल जाता था, but that couldn't save his government. ठीक है। 19th amendment आई 1920, women right to vote. 1920, women right to vote. Women right to vote. Women right to vote, ठीक है। 1920 में औरतों को वोट डालने का हक मिला 19वीं तरमीम के लिए। तो ये भी प्रोग्रेसिविज्म का कंट्रीब्यूशन है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ women in America. This amendment made women politically relevant. This amendment made women politically रेलेवेंट। इससे पहले क्योंकि औरतें वोट नहीं डालती थी तो उनके लिए किसी किस्म की पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट का प्रायोरिटी एजेंडा नहीं होता था। अब जब पॉलिटिकली रेलेवेंट हुई औरतें और वोट डालने का हक उन्हें मिल गया तो गवर्नमेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर देम टू मेक देयर टू गिव देम देयर राइट्स, ताकि इलेक्शन में उनसे वोट लिया जा सके, ठीक है। तो प्रोग्रेसिविज्म ने अमेरिका को डेमोक्रेटाइज भी किया, जेंडर इक्वल भी किया, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी लेकर आए, मोर डेमोक्रेसी भी, वुमेन राइट्स भी लेकर आए। जो चीजें हैं अदरवाइज फूड एंड हेल्थ सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आई, अदर जो शोबे हैं आपके लेबर का है, कंपनीज का है, उनको भी इम्प्रूव किया गया, जिसकी वजह से हालात बेहतर हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी चल रही थी, सो अमेरिकन इकोनॉमी वाज डूइंग प्रीटी ऑलराइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कहा जाता है कि अर्बनाइज्ड सोसाइटी अमेरिका को बनाने में प्रोग्रेसिविज्म का बड़ा रोल है। अर्बनाइज्ड सोसाइटी प्रोग्रेसिविज्म बनाने में अमेरिका जो रूरल रिपब्लिक हुआ करता था उसको एक अर्बनाइज्ड कंट्री, सिविलाइज्ड कंट्री जो है वो प्रोग्रेसिविज्म ने बनाया, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में नहीं पूछा गया, 4 साल में। इसको आप जरूर देख लीजिएगा, इस पर नोट पॉसिबल है कि आ जाए, ठीक है। जी ये लिखा हुआ प्रोग्रेसिविज्म। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिविज्म तो वो लिखा हुआ है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट
शुड देयर बी अल्कोहल और शुडंट देयर बी अल्कोहल, तो वो उतना ही लिखा हुआ है जितनी जरूरत थी। ठीक है, role of USA in World War I. Role of USA. Role of USA in World War I. The war started in 1914. Woodrow Wilson was the president. Being a pacifist, a professor, he decided not to be part of the war. उन्होंने proclamation किया, proclamation of neutrality, और उन्होंने कहा कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं। So America stayed out of this war for 3 years, but America had to participate eventually in the war in 1917, April 1917. What were the causes that brought Americans to the war? उसमें एक तो obviously ethnic and linguistic ties हैं. Americans felt more connected to the Britishers and the French. ये आपको पता है कि First World War जो है वो centrist powers, जिसमें Austro-Hungarian Empire, Ottoman Empire और Germany थे, सेंट्रस्ट पावर्स थी और इंटेंटे पावर्स थी। इंटेंटे पावर्स थी इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली, इनके दरमियान लड़ी थी। हौसला थोड़ा सा करेंगे तो यही सवाल है, causes of war, causes why America joined the World War I. Ethnic and linguistic ties Americans feel करते थे, they felt more inclined and more connected with the Britishers and the French and the Italian. Then they felt connected with the Austro-Hungarians or Germans or Ottomans. तो एक natural psychological हमदर्दी उनकी centrist powers की तरफ नहीं थी, इंटेंटे पावर्स की तरफ। इकोनॉमिक रीजंस भी थे। 2/3 of all the trade that America did, 2/3 of the trade volume was with England and France. जितनी भी ट्रेड अमेरिका करता था उसका 2/3 जो ट्रेड वॉल्यूम है वो इंग्लैंड और फ्रांस के साथ। So should England and France lose this war, indirectly America would stand to lose more than them. Also, अमेरिका ने उनसे $2 billion का लोन भी वापस लेना था। डेट उनके जिम्मे था, अमेरिका को जो वापस मिलना था $2 अरब। तो अगर ये मुल्क हार जाते तो वो $2 अरब भी डूब जाता। So that was also a catalyst factor. Another was credibility of American weapons also. Entente powers, England, France, Germany, England, France, Italy, were mostly using American weapons. So by the end of the day, once the wars are over and the history is written, मोटी बात जो लिखते हैं हिस्टोरियंस वो ये लिखते हैं कि साइड्स यूजिंग वेपन्स ऑफ पार्टी ए लॉस्ट द वॉर एंड साइड्स यूजिंग वेपन्स ऑफ पार्टी बी won the war. America did not want to be on the losing side, because if they did so,
तो credibility of the American weapons would have come in question and they would have lost potential business of weapon orders worth billions of dollars. जो टेडी रूजवेल्ट ने एक बिग स्टिक डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस की थी और अमेरिका के आर्सेनल को हेल्दी किया था, वो अमेरिका लूज करता। तो ये भी रीजन था, बट इससे ज्यादा अहम रीजंस भी एग्जिस्ट करते हैं। इनसे ज्यादा अहम रीजन, एक रीजन है वायलेशन ऑफ अमेरिकन न्यूट्रलिटी। ओके जी, सो अब हम फर्दर बात करेंगे इसके ऊपर। वायलेशन ऑफ अमेरिकन न्यूट्रलिटी बाय द जर्मन्स ऑन मेनी ओकेजन्स, नॉट वंस। एक रीजन ये भी था अमेरिका के फाइनली इस वॉर में शामिल होने का, बिकॉज द जर्मन्स वायलेटेड अमेरिकन न्यूट्रलिटी मेनी टाइम्स। आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल लॉ में एक केस पढ़ा होगा, द एपैम केस। आमतौर पर प्राइस कोर्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पढ़ाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट एपैम केस का जो है वो इसी वायलेशन ऑफ न्यूट्रलिटी से ताल्लुक रखता है। जर्मन्स ने एक ब्रिटिश कमर्शियल शिप, प्राइवेटली ओन्ड शिप, यार इसको चैट्स को खोलो ना बच्चे, मुझे नजर कैसे आएगा कि उन्होंने क्या पूछा। खैर, तो ये एक प्राइवेट जो कंपनी का शिप था, ये पकड़ा जर्मन्स ने और उसको न्यूयॉर्क हार्बर पर जाकर खड़ा किया और उसे कहा अमेरिकन को कि आप जरा इसका ख्याल रखें, वंस द वॉर इज ओवर तो हम आपसे एज ए प्राइस इसको वापस ले लें, माले गनीमत के तौर। The company whose ship it was that went to court
अमेरिकन कोर्ट। तो अमेरिकन कोर्ट ने क्रू को तो फौरन छोड़ दिया और उसके कुछ अर्सा बाद ही ये शिप भी ब्रिटिश कंपनी के हवाले कर दिया कि वंस द शिप एंटर्ड अमेरिकन वाटर्स, अमेरिकन लॉ अप्लाइड ऑन इट एंड दैट इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्राइस, माले गनीमत इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसको अमेरिकन वाटर्स में हमारी मर्जी के बगैर जर्मन्स ने लाया है, हमारी न्यूट्रलिटी को भी वायलेट किया है। वंस इट एंटर्स आवर वाटर्स तो फिर ये हमारा इस्तेहकाक है, हम इसको फैसला कर सकते हैं। पैम केस। फिर अनदर इंसिडेंट कैन बी रिकॉल्ड, एक और शिप था लुसितानिया नाम का, ये भी ब्रिटिश शिप था। roughly 2000 people were on board when German torpedoes attacked it. Only 700 people could be saved. 700 लोगों की जानें बचाई जा सकी. All others died. This happened in American waters. And those who died, 127 people belonged to Americans, belongs to America. तो मरने वालों में से 127 Americans थे. Now you know this is a nation who calls the death of 3 people as massacre. ठीक है, 2000 passengers. तो ये भी एक इंसिडेंट था. Then finally in April 1917 the Germans directly attacked American gunboats as well. So this finally led President Wilson to attack American, to enter the First World War. Another reason is given, is called the Zimmerman telegram. The Zimmerman telegram. ये भी एक वजह बताई जाती है. Zimmerman is the name of the German Minister for Foreign Affairs. उनका नाम Zimmerman था, जी Zimmerman. उन्होंने allegedly एक टेलीग्राम लिखा to the Mexican dictator who was anti-America to come and attack Americans, and if he does so, the Germans would come and help him financially and militarily. I don't know how it would have happened. If you look at the map, तो काफी impossible सी बात लगती है, but still the British intelligence agencies intercepted this telegram, translated this telegram and sent it to the president. Now this was the direct threat to the American people, and he as commander-in-chief had to respond. So that too was the reason. कुछ historians वैसे इसकी veracity को doubt करते हैं इस telegram की. Some historians say that this telegram was concocted by the British intelligence agencies just to drag America into the war, because England was wearing out, their economy was going down, and they wanted an instant end to the war, and that wouldn't have been possible without American fresh entry into it. But whatever the other side may say, the Sarkari history remains that there was a Zimmerman telegram that was intercepted by the British intelligence agencies. So, Foreign Minister of Germany. So this happened in March 1917. March 1917 में ही Russia went communist, और कम्युनिस्टों का पहला टारगेट उस जमाने में कैपिटलिस्ट कंट्रीज में लीडर इंग्लैंड था. So all these things happening at the same time, President Woodrow Wilson finally entered the war and gave the slogan that let's make the world safe again for democracy. Let's make the world safe again for democracy. आइए दुनिया को जमहूरियत के लिए
दोबारा महफूज बनाए। आइए दुनिया को जमहूरियत के लिए दोबारा महफूज बनाए। सो दैट वाज वन रीजन। जंग स्टार्ट हो गई, अमेरिकन ऑब्वियसली सुपीरियर थे इस मामले में, दी अदर पार्टीज वर वेयरिंग आउट बोथ साइड्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1918 में सीज फायर हुआ, 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स पेरिस से बाहर एक जगह का नाम है, लुई 16 ने यहाँ महल तामीर करवाया था, इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहा गया। जंग खत्म हो गई। प्रेसिडेंट Woodrow Wilson wanted peace with dignity, even for the losing sides. He wanted peace with dignity, and for that he gave his formula, which is called 14 points of Wilson. यहां से इंस्पायर्ड कायद-ए-आज़म ने 14 points की टर्म ली थी। 14 points of Wilson. प्रेसिडेंट विल्सन ने 14 नुकात दिए पीस विद डिग्निटी के लिए, ताकि दुनिया अमन से रह सके। उनमें से 4-5 ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हैं, सब मुल्कों के लिए थे, बाकी कंट्री स्पेसिफिक थे कि तुर्की का असली इलाका उसे वापस कर दें, रशिया का इलाका वगैरह। जो यूनिवर्सल हैं उनमें एक था नो सीक्रेट ट्रीटीज, आइंदा से कोई मुल्क किसी मुल्क के साथ खुफिया मुआहदा नहीं करेगा। इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज मस्ट बी देयर आउट इन द ओपन, बाहर होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए किस मुल्क का किससे मुआहदा है। नंबर 2, डिसआर्मामेंट। जहां तक मुमकिन हो सके आप अपना स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स कम करें, और ये स्टॉक पाइल ऑफ वेपन जो है वो मिनिमम डिफेंसिव रिक्वायरमेंट्स के लिए, कम से कम जिससे आप अपने आप को डिफेंड कर सकें, उन रिक्वायरमेंट्स के लिए रखें। ठीक है, इसको इंश्योर कौन कराएगा? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो एक तो डिसआर्मामेंट का फ्रेमवर्क दे, और दूसरा स्मॉलर नेशंस की सॉवरेनिटी और टेरिटरी को प्रोटेक्ट करे, सॉवरेनिटी और टेरिटरी स्मॉलर नेशंस की प्रोटेक्ट करे और पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करे। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। नंबर 4, यूनिफॉर्म ट्रेड रूल्स फॉर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो बेसिक ट्रेड रूल्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। जी, दीज आर द रीजंस। नेचुरल एलाइज भी थे, लैंग्वेज वाइज भी, एथनिसिटी वाइज भी, ट्रेड रिलेशंस भी मैच करते थे, फिर कैपिटलिस्ट जो इंटरेस्ट हैं वो भी इनके मैच करते थे, इसलिए फ्रेंडशिप इनकी रही। यूनिफॉर्म ट्रेड रूल्स होने चाहिए फॉर द वर्ल्ड, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी की नहीं होनी चाहिए। देन 5th one was freedom of navigation in high seas, even in an event of war। भले जंग ही क्यों ना जारी हो, ओपन वाटर्स की सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। यूनिफॉर्म जो हाई सीज हैं उनमें हर किसी को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, भले वो जंग ही क्यों ना मुल्क आपस में लड़ रहे हो। राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, वो शिप्स जो कमर्शियल हैं, वो शिप्स जो जंग नहीं कर रहे, उन्हें गुजरने का हक दिया जाए। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी, लीग ऑफ नेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया गया था कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो हथियारों में कमी करवाए इंटरनेशनली, एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो छोटे मुल्कों के इलाके और उनके इक़्तिदार आला की हिफाजत करे, क्योंकि ज्यादातर बड़ी जंगें छोटे मुल्कों की वजह से होती।
और पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करे। ये 3 बुनियादी मकासद थे जिनमें लीग ऑफ नेशन फेल्ड ऑल टुगेदर। खैर, तो ये पॉइंट्स वुडरो विल्सन ने दिए। वुडरो विल्सन वांटेड दीज पॉइंट्स टू बी पार्ट ऑफ इनोसेंट पैसेज, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, कि अगर कोई कमर्शियल शिप है तो उसको चुपचाप गुजरने दिया जाए, चुपचाप गुजरने दिया जाए दुनिया से, उस हाई सी से या उन वाटर से, उसे ना छिड़ा जाए। इनोसेंट पैसेज, ठीक है। ट्रेड रूल्स, यूनिफॉर्म ट्रेड रूल्स, नॉट ट्रेड रूट्स, ट्रेड रूल्स, ठीक है जी, ज़ाब्ते एक जैसे होने चाहिए, ट्रेड रूल्स। खैर, तो Woodrow Wilson wanted these to be part of Treaty of Versailles, but England and France had other ideas. England and France wanted to humiliate the Germans. They wanted to exact revenge from the Germans. Hence, they did not make these points part of the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles is less of a agreement or a peace treaty. It is more of an instrument of surrender by the Germany. Germany was forced to accept the responsibility of the war. Germany was forced to pay reparations as well. Only League of Nations could make it to the Treaty of Versailles. Second World War की सबसे बड़ी रीजन लोग कहते हैं Treaty of Versailles। तो सिर्फ लीग ऑफ नेशन को Treaty of Versailles में जगह दी गई, बाकी किसी चीज को नहीं। Despite that, Woodrow Wilson wanted it to give it a shot, wanted America to be part of Treaty of Versailles and ratify it. But the public opinion in America was against it, and the Senate was not ready to ratify it. क्योंकि सेनेट में जो विल्सोनियंस हैं, विल्सन के हामी, उनकी तादाद कम थी, और जो खिलाफ थे इनके रिपब्लिकन्स, उनकी तादाद ज्यादा थी, और उनमें कुछ सेनेटर्स इनकरेजिबल थे जिनकी साइड्स फ्लिप नहीं करवाई जा सकती। सो विल्सन टुक टू पब्लिक, विल्सन ने सोचा कि पब्लिक ओपिनियन अपने हक में करने की कोशिश करता हूं, इस ट्रीटी को रेटिफाई कराने के लिए सेनेट से। उस पर्पस के लिए ही स्टार्टेड टू ट्रैवल to America and make speeches. He traveled 8,000 miles in 3 weeks and gave 40 speeches to make America part of this treaty. But his fragile health was not good enough to undergo such rigors. So he suffered a stroke, collapsed on his rail car, was rushed to the Washington DC. He did not come back to public life again, died in 1992. Elections हुए 1921 में, उन elections में Republicans जीत गए। Republican President Warren Hardings जीते, उन्होंने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जिम कॉक्स को हराया, और रिपब्लिकन्स तो ऑलरेडी नहीं उधर जाना चाहते थे और अमेरिका तक महदूद करना चाहते थे। सो अमेरिका डिड नॉट बिकम पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ऑल्दो दे हैड अ परमानेंट सीट देयर, and they did not ratify the Treaty of Versailles either. America once again went to its non-interference isolation policy for Americans. आज यहीं तक, अगली क्लास में इंशाल्लाह ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका रोल इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर पर बात करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है? एनीथिंग एट ऑल? ओके जी, थैंक यू सो मच। Not 8 miles, 8,000 miles, 3 weeks, 40 speeches. रिपब्लिकन पार्टी तो बहुत पहले से बन चुकी थी भाई। वॉरेन हार्डिंग was the new president, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट वॉरेन हार्डिंग्स लिखा है मैंने, ठीक है। 14-15 लेक्चर्स होंगे जी। हिटलर was in World War II.
वर्ल्ड वाटर, उस पर बात करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू।